Hello guys, welcome to Abhipedia and my name is Himanshu and today I'm going to take your mentorship session for EPFO 2025. अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे? We will discuss the past 3 years paper trend for what examination? For the EO/AO and the APFC examination combined. तो हम जो दोनों एग्जामिनेशन पास्ट 3 years में जो हुए थे दैट इज आपका 2021 में हुआ था, 2023 में हुआ था एंड आपका 2017 में हुआ था ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन। एंड आपका एपीएफसी कब हुआ था? 2023 वाला और 2016 वाला। तो इनके हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और उससे सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो है हर सब्जेक्ट की दैट वी विल ट्राई टू एनालाइज, and after the analyzation we will try to find out what are the most scoring areas which we can cover in priority. So let us start. So this was the EO/AO paper. This आपको पता होगा कि इस साल जो EO/AO पेपर है और जो APFC पेपर है दोनों EPFO के अंडर आते हैं और यूपीएससी कंडक्ट करता है। इस साल ये दोनों पेपर कंबाइंड होके और एक ही पेपर इन दोनों का हो चुका है। सो अब हम अगर ट्रेंड एनालाइज स्टडी करेंगे तो हमें ये सेपरेटली ही करने पड़ेंगे, पर इस साल का जो पेपर है दैट विल बी योर कंबाइंड एग्जामिनेशन. The syllabus is more or less the same. So just let us see what was the trend in the past 3 years in the AO/AO examination. So the trend was in your quant topic. जो quant का आपका टॉपिक है उसका क्या ट्रेंड था? Let us see. उसमें there has been a steady number of questions that has been asked for the 3 years, that is 15, 15 and 15. अब इसमें ना तो क्वेश्चन बढ़े हैं ना क्वेश्चन कम हुए हैं, तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 15 क्वेश्चन ही इस टॉपिक में से आएंगे. सो दैट मेक्स दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. English, it was 20, 20 and 20. This has also maintained the constancy. अकाउंटेंसी में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, 2021 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2010 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे. अब आईआर एंड लेबर लॉज, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, 2021 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2023 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे. अब इन सेम सब्जेक्ट्स का एपीएफसी में क्या वेटेज था? लेट अस सी. जब हम दोनों के एवरेज क्वेश्चंस लेंगे तब हमें एक आइडिया, ब्रॉड आइडिया होगा कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड which we have to do on priority basis. But you should keep one thing in mind: UPSC does not have any restricted patterns or fixed patterns. UPSC कभी भी अपना पैटर्न चेंज कर सकती है. मैं आपको अभी आगे वाले लेक्चर में दिखाऊंगा भी हाउ UPSC यूजुअली चेंजेस द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस. कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेगी किसी सब्जेक्ट में, कभी उस सब्जेक्ट से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. फिर भी एक एवरेज हम जब एनालाइज करेंगे, कुछ एरियाज हैं जहां पे कॉन्स्टेंटली यूपीएससी ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कांस्टेंट रखे हैं. तो उन एरियाज को हम प्रायोरिटी में अगर कवर कर लेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर आवर प्रिपरेशन. सो वी विल डू दैट एनालिसिस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांट में अराउंड 15 क्वेश्चन पूछे गए थे EO/AO में, पास्ट जो 3 पेपर्स हुए थे उसमें. इंग्लिश में अराउंड 20, अकाउंटेंसी में 10 to 12 ऑन एन एवरेज, एंड IR एंड लेबर लॉस दैट इज योर
इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, इसमें 15, 9 एंड 15। सो इसका भी एवरेज अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस था। अब सेम सब्जेक्ट्स की वेटेज क्या थी एपीएफसी में? लेट अस स्किप टू एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो एपीएफसी एग्जामिनेशन में क्वांट की वेटेज थी 28 क्वेश्चन in your 2016, and what happened in 2023? The questions were reduced to 15. So this is what I was talking about, that UPSC is known to change the patterns, but still चाहे वो 28 हो चाहे वो 15 हो, the weightage of quant is of sufficient सफिशिएंट इम्पोर्टेंस। आपको यहाँ पे पूरी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशन। स्टैटिस्टिक्स के अलग से 2 क्वेश्चंस 2016 में आए थे और 2023 में देवर 0। इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस इन 2016 एंड 20 क्वेश्चंस इन 2023। सो क्वांट एंड इंग्लिश हैज importance according to the number of questions being asked. अब accountancy 3 questions and it was increased to 14 question. So this is the pattern which UPSC follows. एक साल 3 क्वेश्चन, एक साल 14 क्वेश्चन। Now let us come back to EO-AO examination. So अकाउंटेंसी में क्या थे? 14, 10, 10, 15, 9, 15 in industrial relation and labor laws. Here we have seen accountancy from 3 questions it was increased to 40, and in your industrial relation and social securities, so it is the subject is segregated between industrial relation and अलग से labor laws मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। So the combined was 7 and 2, 9 questions, and here it was increased to 18 question. So this makes this subject important, around 18 question from industrial relations, social securities and labor laws. अब कंप्यूटर्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 8 to 10 questions. Let us compare it with our EO-AO paper. तो कंप्यूटर्स में EO-AO पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? These were 5 in 2017, 2021 में 10 and then 11. Around your 10 questions on a consistent basis. Social security 5, 4 and 8. So around 5 to 6 questions on an average. Now let us come to polity. So this is for EO and AO examination. यहाँ का क्या ट्रेंड था? 2017 में पॉलिटी से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 5 2021 में एंड 5 इन 2023। जनरल साइंस की वेटेज पॉलिटी से ज़्यादा है, 11, 14 और 10। अब लेट अस सी द सेम सब्जेक्ट्स फॉर APFC। तो कंप्यूटर्स में हमने देख लिया था 8 क्वेश्चंस इन 2016 and 10 questions in 2023. In polity, these are the same numbers, around 9 questions in 2016 and 8 questions in 2023. General science, around 5 questions in 16 and 10 questions in 23. So there is a similarity in the number of questions. When we will end this video, we will look at that similarity. So what else? जनरल साइंस हो गया था EO-AO में।
Now there is history and culture. All the history, ancient, medieval, our freedom struggle and the culture. इसमें there is a very high weightage, that is your 15 in 2017, 16 in 2021 and 10 in 23, on an average 12 to 13 questions. अब लेट अस कम टू द करंट अफेयर्स. करंट से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे ईओएओ में? अराउंड ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन. इकोनॉमिक्स, the economics weightage for EOAO has been low, but for APFC, as you will notice, has been very high in the most recent examination. So around your 4 questions. Geography, which includes development also, around 3 questions on an average. Now let us compare these subject with EOAO. तो यहाँ पे कल्चर और हेरिटेज, दैट इज योर एंशियंट, medieval, art and culture. This is your 2 questions and 6 questions for APFC. And your freedom struggle, Indian freedom struggle, around 7 questions and 4 questions. तो टोटल कितने हो गए ये? 9 and 10. So on an average around 9.5 something. So let us move further. करंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2016 में और 9 क्वेश्चन 2023 में. अब इकोनॉमिक्स में what I was trying to tell you कि in EOAO the weightage was on an average 4 questions, but here you can see in 2016 the number of questions that was asked from economics was 18. This is a very significant number and this was reduced drastically in 2023. So this is how UPSC creates its questions. You cannot predict anything. Now, population and development, around 3 questions. So now, what is the conclusion which we can draw? What are the analyses which we can do from the trends of previous year questions? See, there are some topics जिनकी वेटेज फ्लक्चुएट तो होती है, लेकिन फिर भी वो इतने सिग्निफिकेंट है कि देयर कैन नॉट बी मच फ्लक्चुएशंस इन दीज टॉपिक्स which we have seen in the past year trends. What are these topics? These are your quant. Now I am talking about both the papers, the EOAO paper and the APFC paper, क्योंकि इतने ही एवरेज थे APFC में. Okay. English, this is also of same importance. Accountancy, very very important. Industrial relation and labor laws, one of the most important. Not just according to the EOAO, but also according to your APFC. So these are the topics जो आपको अपनी प्रायोरिटी में रखने हैं. Quant, English, accountancy, your industrial relation and labor laws. Then after that, अब यहाँ पे भी quant is very important, English, accountancy and your
इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। अब उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? योर कंप्यूटर्स। Computers also have a significant weightage. Then comes your general science. General science is also having a significant weightage. Your history had a significant weightage in EO/AO, but it was reduced in the APFC. But you should be prepared with this subject as well. History and especially your freedom struggle. Then comes your current affairs. Current affairs also hold a significant importance for your examinations. So, as you have seen, all the previous year examinations which were held for EO/AO and APFC. See, according to these trends, what you can do is आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले जो आप सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर कर सकते हैं दैट शुड बी योर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, अकाउंटेंसी, क्वांट, इंग्लिश and your computers. So if you are covering these subjects, so you can say that you're almost more than 50% syllabus or 50% of the examination is in your hand. 50% मैं एक लोअर एंड पर कह रहा हूं, बट इट इज ऑलमोस्ट योर 70% of the examination. Just these subjects, that is your computers, your quant, English, accountancy, industrial relation and labor laws. So that is what a strategy according to me you can make for the examination. This examination is pretty simple. You have to first complete your syllabus, and while completing your syllabus you can give priorities to some topics keeping in mind past year trends. I have explained all the questions that were asked, what was the number of question from every subject. You can yourself do the analysis and study the past year trends. I will show you the entire PDF. So according to your own analysis, you can make your own strategy as well. But what we have understood with the trend is that your quant, your English, your accountancy, industrial relation, labor laws, and your computers, these make the most important part of the examination. So if you want to do the analysis yourself also, I am showing you the PDF from the start, and this PDF will also be available at the Abhipedia app itself. So this is for the EO/AO examination. This is for the APFC examination.
Now, what I have said again and again, you cannot expect a fixed pattern, but you can do prioritization in your studies. So, all the best for your examination and keep studying hard. And do visit the Abhipedia website for more updates of the examination. We have live recordings and recorded lectures, test series, mentorship sessions, weekly tests. So, do visit the Abhipedia website or the app itself. Thank you.